Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 4, exercise 13.1. So in this question we have identify the greater number whenever possible in each of the following. So यहाँ पे आपको दो numbers given है और you can say they are in the exponential form. So हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा greater है. So वो जज करने के लिए हमें इसे expand करना पड़ेगा. So अगर जैसे हमारे पास है 4 की पावर 3, so this means 4 into 4 into 4, right? So 4 into 4, 16, 16 into 4, let's multiply, 16 into 4 will be 6 4s are 24, 4 1s are 4 plus 2, 6. So हमारे पास आ जाएगा 64, right? So 4 की पावर 3 is equals to 64. अब चेक करते हैं 3 की पावर 4 कितना होता है. So 3 into 3 into 3 into 3 चार बार होगा. So 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 into 9 81. So 81. Now 4 की पावर 3 is 64 and 3 की पावर 4 is 81. We can clearly see that 81 is greater than 64. Therefore जो हमारा 81 है that is 3 की पावर 4 will be greater than 4 की पावर 3. ठीक है. So this was the first part. Now let's come to the next part. Second part में है 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5. So 5 की पावर 3 is equals to 5 into 5 into 5 which is 5 5s are 25. 25 into 5. So let's multiply 25 into 5. This will be 5 5s are 25 and 5 into 2 is 10. So it will be 12, 125. So ये आ गया 125. Now let's take 3 की power 5. This will be 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 5 times करेंगे. Now अभी हमने देखा 3 की पावर 4 होता है 81 और यहाँ पे 4 से एक ज्यादा 3 है. सो हम 81 into 3 कर सकते हैं. सो 81 into 3 will be 3 1s are 3, 3 8s are 24. So we have 243. Now इन दोनों में से कौन सा बड़ा है. 243 is greater than 125. This means 243 is 3 की पावर 5 greater than 5 की power 3. ठीक है. So this was part number 1 and 2. Now let's come to the rest of the parts. Now coming to the third part. Third part में है 2 की power 8 and 8 की power 2. So let's solve this. 2 raised to the power 8 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 multiply 2 2 and 2 again. So ये 8 times हो गया. So इसको multiply करते हैं. It will be 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So 16 into 16. 16 multiply by 16 is 6 6 are 36. 6 1s are 6 plus 3 9. 1 into 6 6. 1 into 1 1. This will be 6 and 9 plus 6 is 15 and 2. So we have 256. Next है 8 raised to the power 2. So 8 square means 8 into 8 which is 8 into 8 is 64. So we can see 2 raised to the power 8 is greater than 8 raised to the power 2. ठीक है. Now fourth part में है 100 square और 2 की power 100. Now see 100 square को तो पहले हम solve कर लेते हैं. 100 की पावर 2 is 100 into 100 which is 10,000. Now next is 2 की पावर 100. So अगर आपको 2 की पावर 100 given है means आपको 2 को 100 times multiply करना है which is very impossible. So उसके लिए what I'll do is let's multiply 2 10 times. ठीक है. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. हमने इसे 10 टाइम्स किया है. सो दिस मीन्स ये हो गया 2 raised to the power 10.
So now 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So 32 into 32 will be 2 into 2, 4, 2 into 3, 6, 3 into 2, 6, 3 3s are 9. So 4, 6 plus 6 is 12, 9 plus 1 is 10. So we have 1024. Now see, ये 1024 10 की पावर 2 की पावर 10 है, मीन सिर्फ 10 टाइम्स खोलने पे 1024 आ रहे. अभी मुझे इसे 90 टाइम्स और ओपन करना है. सो जैसे मैंने 10 का पेयर बनाया, ऐसे मैं 10 के 10 पेयर्स बना सकती हूँ, बिकॉज ये 10 बार हुआ, फिर 10 बार, फिर 10 बार, सो करते करते 10 बार होगा ऐसे. सो दिस मीन्स ये नंबर 10 बार मल्टीप्लाई होगा. सो 2 की पावर 100 मीन्स दिस इंटू दिस इंटू दिस एंड सो ऑन. ये 10 टाइम्स चलता रहेगा. एंड जो ये 10,000 है, नाउ वी कैन क्लियरली सी, अगर मैं सिर्फ 2 को भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो इससे बड़ा आएगा. सो दिस मीन्स कि ये जो हमारा 2 रेज टू द पावर 100 है, दिस विल बी ग्रेटर देन 100 रेज टू द पावर 2. ठीक है. So this was part number 4. Now let's come to the next part. Now coming to the fifth part. Fifth part में है 2 raised to the power 10 and 10 raised to the power 2. So सबसे पहले 2 raised to the power 10 will be 2 into 2. ऐसे 10 times करना पड़ेगा. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. So now let's multiply this. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. And आगे भी 5 times है, तो 32 into 32. So 32 multiplied by 32 will be 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9. So this will be 4, 12, 10. So this means this is equals to 1024. ठीक है. And then we have 10 raised to the power 2, which is 10 into 10. So 10 into 10 is 100. So we can clearly see 1024 is greater than 100. This means 2 raised to the power 10 is greater than 10 raised to the power 2. Fine. So this was fifth part and this was the last part of question number 4. So now let's come to the next question.